Okay, most of the graduates or undergraduate students or postgraduate students, they apply or they take education in order to get their dream job. So you have dreams, you have jobs, and before you apply for any jobs, there are certain things you need to work on. Number one, you need to keep your resume ready. Resume has to be very much professional, okay, and sophisticated, completing all accurate details. Number two is you must be good in writing job application letter. ओके, जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखने से पहले आपको क्या करना होता है? आपने कोई तो जॉब देखा होगा, वैकेंसी देखी होगी. उसके दो तरीके होते हैं, सोर्सेज दो. एक, आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, पब्लिश एडवर्टाइजमेंट फॉर द जॉब दैट देयर इज अ वैकेंसी. और दूसरा हो सकता है ऑनलाइन. ऑनलाइन में यानी कि नौकरी या इंडीड या अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे आपको आपने रजिस्टर किया होगा एंड यू माइट हैव रिसीव्ड जॉब अलर्ट along with job description. So job description, resume and job advertisement, these are the three things you must have gone through before applying for any job. Now you need to understand what is my role. तो कभी-कभी job advertisement publish होने के बाद उन्होंने लिखा होता है the interested and eligible candidates need to send the job application letter and resume to, and then email address is given. Okay, so you have to prepare the job application letter. So it could be for any job like management trainee or assistant manager, brand manager, accountant, clerk or senior manager, group manager, any position. So I'm trying to explain the format, standard format which you can use it for writing any job application letter. So first and foremost thing that you need to concentrate on is receiver's address. रिसीवर्स एड्रेस वो होता है कि हमें किसको जॉब एप्लीकेशन लिखना है, यानी कि कंपनी. ओके, समटाइम्स रिसीवर्स एड्रेस इज गिवन इन द जॉब एडवर्टाइजमेंट. फॉर एग्जांपल, जॉब एप्लीकेशन लेटर एंड रेज्यूमे शुड बी सेंट टू, है ना, टू के बाद एड्रेस दिया जाता है. नाउडेज दे आर स्टार्टेड गिविंग ईमेल एड्रेस. सो इफ एड्रेस इज गिवन यू कैन राइट इट हियर. इन एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू यूज दिस एड्रेस. तो इसमें क्या होता है, पहला टू, उसके बाद इफ नेम, जनरली हु इज द पर्सन टेकिंग केयर ऑफ रिक्रूटमेंट इन कंपनी? HR could be HR head or HR manager. So sometimes it is mentioned there HR head, or sometimes name of HR manager is also mentioned. If the name is mentioned, you can write it here. Then followed by this there is a company address. Okay, company address and then there is a date. डेट के दो फॉर्मेट होते हैं. अगर आप यूएस बेस्ड कंपनी के लिए अप्लाई करते हो तो आप यूएस अमेरिकन डेट फॉर्मेट फॉलो करो, अदरवाइज यू कैन फॉलो ब्रिटिश व्हिच इज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया. तो अमेरिकन कैसे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट इज द मंथ, देन डेट कॉमा एंड देन 4 डिजिट का ईयर. ओके, अगर आपको स्पेलिंग आता नहीं मंथ का, सितंबर, अक्टूबर टाइप का, so please avoid it. If you are not sure about the spelling of the month, avoid it and you can prefer the digits. Okay, digits में क्या होगा, यहाँ पे पहला आएगा month. Okay, month आएगा, जैसे यहाँ पे जुलाई है तो 07 आएगा, 07/02 और उसके बाद 2021. Okay, that is the best way to avoid the spellings. Then comes sender's address. Now in latest format, sender's address is nowadays optional. Earlier it was mandatory, but still it is always good to mention the sender's address. So you can write your own address. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो रिसीवर है उसको टू बोला गया और यहाँ पे from यानी प्रति प्रेषक. Got it? Yes. Okay. So here is your address. Now what if you are migrated or relocated to some other city and you are staying on rent? तो आप कैसे एड्रेस दोगे? Yeah, that is correspondence address. Very good. But how it will be? How can you frame the address? उस केस में आपको यहाँ पे लिखना होगा केयर ऑफ. ओके, आपको यहाँ पे लिखना होगा केयर ऑफ और उसके बाद वहां के ओनर का एड्रेस. ओके, सो यहाँ पे आप लिखोगे केयर ऑफ एंड देन ओनर का एड्रेस. ओके, इससे पता चलेगा दिस इज करस्पॉन्डेंस एड्रेस और ये एड्रेस इनका खुद का नहीं है, कंसर्न करस्पॉन्डेंस का एड्रेस है.
ओके, तो ऐसे सेंडर का एड्रेस पता चलता है. सो फर्स्ट थिंग क्लियर हुआ, रिसीवर्स एड्रेस. सेकंड इज सेंडर. इवन दो इट इज ऑप्शनल, स्टिल यू कैन राइट इट. गुड टू नो इंफॉर्मेशन. थर्ड थिंग इज सब्जेक्ट, है ना. ऑलवेज job application letter must have subject, because there are hundreds or thousands of letters the HR person is getting for different positions. तो उनको क्विकली समझ में आए कि ये लेटर किसके रिगार्डिंग है, कौन से जॉब पोस्ट के रिगार्डिंग है, तो आपको मेंशन करना जरूरी है ना. सो किस काम के लिए लिख रहे हैं आप. सो इट इज द स्टैंडर्ड गोल्डन लाइन हियर, द जॉब एप्लीकेशन लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ. तो उसके लिए जो भी पोस्ट होगी जो जॉब एडवर्टाइजमेंट में दी है, उस पोस्ट का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं. क्लियर? यस, नो? Yes. Okay, so here assuming that the job is for assistant manager or assistant sales manager, so here you can write the job application for the post of assistant sales manager, ASM capital होना चाहिए. Then comes reference. Reference is how did you come to know about the job, what is the source of information. तो क्या क्या सोर्स हो सकता है. न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट. टेलीविजन दूसरा सोशल मीडिया. वेरी गुड. एंड थर्ड टेलीविजन भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, और फैमिली फ्रेंड्स. वेरी गुड. एंड देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट, एग्जिस्टिंग जॉब पोर्टल्स. जॉब पोर्टल. Many times people register on Naukri and all, so they get job alerts, right? They could come to know. So there are multiple sources. अगर आपका ऑनलाइन जॉब पोर्टल से आया है तो यू कैन राइट naukri.com जॉब पोर्टल. जॉब कोड रहता है उसका हमेशा, जॉब कोड वहां पे लिख सकते हैं. दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स उस कंपनी में काम करते हैं, so they will update you, communicate you, तो उनका नाम और एम्प्लॉय आईडी. क्लियर? थर्ड कुड बी जॉब एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो गया न्यूज़पेपर में, उसके लिए ये लाइन आप यूज कर सकते हैं. योर जॉब एडवर्टाइजमेंट इन whatever name of, I have just given it for example Times of India, dated this one. Okay, यहाँ पे ऊपर अगर आपने अमेरिकन फॉर्मेट फॉलो किया तो यहाँ पे भी आपको अमेरिकन फॉलो करना है, राइट. ये डेट और वहां की डेट जस्ट गिव थॉट, हाँ, सेम नहीं होना चाहिए. Then this is called as salutation. Salutation is like respected sir, madam. If you know that the person is gentleman, you can say respected sir. If you know ma'am, then here ma'am. Ma'am का mom मत बनाओ. Okay, be careful in terms of spellings. Okay, you can write madam. Don't all the time use shortcuts. Okay, and if you are not sure, then better cover both, whichever is applicable. Okay, this is the salutation. Then we come here to main body of letter. This is very crucial part from your selection point of view. Okay, so यहाँ पे आपको क्या करना है? This is the golden opportunity for you to project your expertise. Okay, so this is again golden opening with reference to the above subject, है ना? Reference भी है, subject भी है, right? इस रेफरेंस को और सब्जेक्ट को पकड़ के I wish to apply for the post of, whatever post is there, you can mention it here. I am, that is your name, I am so and so from, okay, I have completed Masters of Business Administration, you can write in bracket MBA with specialization finance or IB etc. as a major. This is the typical language, okay, as a major. इसका मतलब यही हुआ कि you are specialized in this. Okay, so till here I have completed. Now do you have experience? If you have experience, you can mention it there. I have 3 years of working experience. See, not any other common experience. There are 2 types of experience. One is working, another is relevant experience. So if you have experience, you can mention it in where multinational company, MNC, or if you know the name of company, you can still mention it. I am proactive team member with sound knowledge of computers and technologies. So this shows that you are a techno savvy person. You have good knowledge in your domain as well as you are also good in digital literacy, which is the need of today's hour.
Okay, so this is a good opportunity for you that how your candidature is good and how you can contribute to the organization. You can have one more paragraph here depending on, for example, if you are looking for manager post, definitely it will, one paragraph would not be sufficient, right? You can talk about extracurricular activities, what all things you did, what are your achievements, or if you have received any best award, prize, okay, remarkable achievement, you can mention it here, okay? But see to it that it should have good sound impact and it should be linked with the contribution to the organization. For example, if you are good in terms of writing blogs, so this will help to the company in terms of creating content for company's different accounts like Facebook, Instagram, LinkedIn, or website, newsletters, or some company reports. So it will show that you are good in writing, so company can take the leverage and benefit of your writing capacity for the organizational growth. And the last part here is regards. Okay, warm regards, your name, city. Now this is the last part, enclosure. Enclosure means what all documents you are attaching here. Okay, so enclosure could be your resume copy. Okay, sometimes some companies are asking for cover letter. So you must be good in also drafting cover letter. Cover letter is very unique and short profile of your summary. Okay, and here this is the important part, social media profile links you can provide, which are active original accounts. Okay, and you should ensure that you are providing authentic, easy to click, है ना, blue tick वाला होना चाहिए, जैसे कि उन्होंने click कर दिया तो active होना चाहिए. You should redirect to the your profile. Okay, so here you can provide the link of, well, example one, LinkedIn. Second could be your Naukri profile, or third could be your, if you are writing blogs, right? Blogspot का एक अपना खुद का एक link तैयार होता है. ऐसे दो तीन लिंक आप वेरिफिकेशन के लिए दे सकते हो, and you can also mention some good names for recommendation. Okay, so this is how you can create a very effective, powerful, and easy to understand, sophisticated corporate level job application letter. Okay.